So today we're reading from a book by His Grace वैशेषिका प्रभु. आज हम पढ़ेंगे वैशेषिका प्रभु द्वारा लिखित एक पुस्तक. And the title is Our Family Business. उस पुस्तक का नाम है Our Family Business, हमारे घर का व्यापार. The Great Art of Distributing Books. पुस्तक वितरण करने की महान कला के बारे में. So, His Grace Vaisheshika Prabhu wrote this book with different purposes, but mainly to give encouragement to the devotees to distribute Srila Prabhupada's books. वैशेषिका प्रभु का पुस्तक लिखने का जो उद्देश्य है वो बहुत उद्देश्य थे, लेकिन मुख्य उद्देश्य था कि जो भक्त प्रभुपाद की पुस्तकें बांटते उनको प्रोत्साहन देना. So, you know, many times we hear that the phrase, you know, books are the basis. हम बहुत बार सुनते हैं books are the basis, यानी पुस्तक यही आधार है, ये हम सुनते हैं. So Srila Prabhupada himself used this phrase in a letter to Mandali Bhadra dated January 20th, 1972. जनवरी 20, 1972 में मंडली भद्र को लिखे हुए पत्र में प्रभुपाद ने स्वयं इस वाक्य का उपयोग किया है, बुक्स आर द बेसिस, यानी पुस्तक यही आधार है. How would you say that in Hindi? Books are the basis. इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? बुक्स आर द बेसिस, पुस्तक यही आधार है, ऐसा ही कहेंगे ना? क्या कैसा कहेंगे? Quote, my first concern is that my books shall be published and distributed profusely all over the world. मेरी पहली चिंता है कि मेरी पुस्तकें छापी जाए, प्रचुर मात्रा में और पूरे जगत में बांटी जाए. So this is who's speaking? This is Prabhupada speaking. ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं. Srila Prabhupada's first concern is that his books be published and distributed all over the world. प्रभुपाद की पहली चिंता यह है कि उनकी पुस्तकें छापी जाए और बांटी जाए पूरे जगत में. Practically, books are the basis. व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो पुस्तक यही आधार है, बेसिस है, नींव है. Of our movement. हमारे आंदोलन की नींव है. So we have a movement. तो हमारा एक आंदोलन है. What's the name of that movement? आंदोलन का नाम क्या है? Hare Krishna. हरे कृष्णा. It's the Hare Krishna movement. हरे कृष्णा आंदोलन है. Remember that. इसको याद रखो. It's not the Radhe Radhe movement. राधे राधे आंदोलन नहीं है ये. It's not the Hari Bol movement. हरि बोल आंदोलन भी नहीं है. When Srila Prabhupada was walking in Vrindavan, जब प्रभुपाद वृंदावन में चलते थे, Chattigar Road, चटीकरा रोड पर, people would greet him by Radhe Radhe. लोग उनको राधे राधे करके पुकारते थे. And how would Srila Prabhupada greet them? प्रभुपाद कैसे अभिवादन करते थे उनको, लेकिन बदले में That's very weak. That's a lot better. Thank you. So this is the Hare Krishna movement, our movement. Without them, means books, our preaching has no effect. And again, in a letter he wrote to Tusta Krishna Swami in January 9th, 1976, books are the basis of our movement. Whatever appreciation we are getting on account of our books, it is because we're following the path chalked out by exalted devotees. हमारे पुस्तकों के कारण जो भी हमें सराहना मिल रही है उसका कारण यही है कि हम महान भक्तों के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुशीलन कर रहे हैं. So what does it mean that Srila Prabhupada's books are the foundation, the basis of ISKCON? ISKCON का नींव या आधार हमारे प्रभुपाद की पुस्तक है. इस वाक्य का अर्थ क्या है? And Srila Prabhupada writes a letter to one devotee named Damodar and explains it.
प्रभुपाद एक पत्र लिखते दामोदर नाम के भक्त को, उसको उसमें इस बात को बताते हैं। I am especially pleased to hear that your distribution of our books and magazines has increased. प्रभुपाद कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ ये सुनकर कि हमारी पुस्तकों का वितरण और मैगजीन का वितरण बढ़ गया है। Go on in this way, increasing more and more. इस प्रकार से बढ़ाते जाइए, अधिक से अधिक। Each time someone reads some solid information about Krishna, his life becomes changed in some way. हर बार कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में कोई ना कोई ठोस जानकारी जब पढ़ता है तो उसका जीवन बदल जाता है किसी न किसी तरह से। These literatures are the solid ground upon which our preaching stands. हमारा प्रचार किस बात पर खड़ा रहता है? यह पुस्तकों के द्वारा बनाई गई ठोस जमीन पर। So I want that they should be available to everyone, as many as possible. So please try for this. तो मैं चाहता हूँ कि ये अधिक से अधिक उपलब्ध हो, जितनी हो सके उतनी हर एक व्यक्ति को, तो इसके लिए प्रयास कीजिए आप। So Vaisheshika Prabhu goes on to explain that in this part, right, this letter, Prabhupada uses the word solid twice. Twice he uses. प्रभुपाद वैशेषिक प्रभु बताते हैं कि इस पत्र में प्रभुपाद 2 बार सॉलिड शब्द का उपयोग करते हैं। सॉलिड यानी ठोस। So there are so many translations of Bhagavad Gita. तो भगवद गीता के बहुत सारे अनुवाद हो चुके हैं। But in almost none of them do they introduce Krishna as the Supreme Personality of Godhead. लेकिन लगभग किसी भी अनुवाद में भगवद गीता के किसी ने भी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। And these translations, they're not encouraging the readers to surrender to Krishna and to render devotional service to Krishna. और ये जो सारे अनुवाद है वे वाचकों को प्रोत्साहन नहीं देते कि आप भगवान कृष्ण को शरणागत हो जाओ और उनकी सेवा करो, भक्तिमय सेवा। But Srila Prabhupada's books, they do just that. They introduce Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and they encourage everyone to do devotional service. लेकिन प्रभुपाद की पुस्तकें वही बात को करती है, वे कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रस्तुत करती है और सबको भक्तिमय सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। So these translations, no one became, I can't say no one, but almost no one ever became a devotee of Krishna by reading these translations, these other translations of Bhagavad Gita. तो दूसरे सारे जो अनुवाद भगवद गीता के उनको पढ़कर लगभग कोई भी व्यक्ति बना ही नहीं कृष्ण का भक्त दूसरा अनुवाद को पढ़कर। So these books didn't have solid information, about Krishna in them. क्योंकि इन पुस्तकों में कृष्ण के बारे में ठोस जानकारी नहीं थी। And therefore people's lives weren't changed. और इसलिए लोगों के जीवन नहीं बदल रहे थे। But just the opposite of that, लेकिन इसका ठीक उल्टा। Srila Prabhupada's books, प्रभुपाद की पुस्तकें, they're all about information of Krishna being the Supreme Personality of Godhead. सब कृष्ण के बारे में जानकारी से भरी हुई है और जिसमें कहा गया है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। And people all over the world took to Krishna Consciousness by reading his books. और पूरे जगत में लोगों ने कृष्ण भावना का स्वीकार किया इन पुस्तकों को पढ़कर। And it's increasing. More and more people are taking to the process of devotional service by reading Srila Prabhupada's books. और ये बढ़ता ही जा रहा है, अधिक से अधिक लोग कृष्ण भावना की प्रक्रिया का स्वीकार कर रहे हैं प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़कर। So that's why Srila Prabhupada, this is the solid ground of our movement. तो प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए कि यही हमारे आंदोलन का ठोस जमीन है जिसके ऊपर हमारा आंदोलन खड़ा है। Why? Because these books, they change people's lives. क्योंकि ये पुस्तकें जो है लोगों का जीवन बदलती है। By reading one of Srila Prabhupada's books, I came to Krishna Consciousness, and I would adventure to say that most people came to Krishna Consciousness by reading Srila Prabhupada's books. मैंने प्रभुपाद की एक पुस्तक पढ़ी और मैं कृष्ण भावना में आया और मैं ये कहने का साहस भी कर सकता हूँ कि अधिकतर लोग जो है वे कोई ना कोई पुस्तक पढ़ के ही आंदोलन में आए। And what makes Prabhupada's books different? और प्रभुपाद की पुस्तकें अलग क्यों है? What makes Srila Prabhupada's books special? और प्रभुपाद की पुस्तकें विशेष क्यों है?
And that is because they're always promoting unmotivated, uninterrupted, pure devotional service to Krishna. क्योंकि वे हमेशा अहेतुकी अप्रतिहता शुद्ध कृष्ण भक्ति का ही भक्तिमय सेवा का ही उपदेश देती है. And they describe the name, form, loving pastimes of the Lord and His devotees. और वे नाम रूप गुण लीला भगवान और भगवान के भक्तों का वर्णन करती है. Srila Prabhupada's purports are not simply the musings of a single author. They are both authoritative and realized. प्रभुपाद की पुस्तक केवल एक लेखक के द्वारा लिखा हुआ कोई लेखन नहीं है, ये अधिकृत भी है और परंपरा से आया है. This not only makes Srila Prabhupada's books relishable, it makes them rare in the world of spiritual literature. इसके कारण ये पुस्तकें केवल आस्वाद्य ही नहीं बनी है, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ एक वस्तु बन गई है आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में, आध्यात्मिक जीवन में. Like Srila Prabhupada explains, whatever appreciation we're getting these books is because we're following the path chalked out by the acharyas. So not only is Srila Prabhupada's books giving us the acharyas' knowledge and the process, but it's coming from a realized soul. तो केवल ज्ञान आचार्यों का ज्ञान और उनकी प्रक्रिया ही नहीं दे रही है प्रभुपाद की पुस्तकें, लेकिन ये एक साक्षात्कारी स्रोत से आती है ये पुस्तकें. So Vaisheshika Prabhu here says the descriptions of the Lord and the spiritual world in Srila Prabhupada's books are enthralling. तो प्रभुपाद की पुस्तकों में भगवान के धाम और भगवान का जो वर्णन है वो एक सम्मोहित करने वाला है, सम्मोहित करता है. So here's one purport from the Chaitanya Charitamrita. तो जैसे यहाँ पर एक तात्पर्य है चैतन्य चरितामृत में से. The residents of Vaikuntha have brilliantly black complexions, much more fascinating and attractive than the dull white and black complexions found in the material world. तो भौतिक जगत में जो काला और सफेद रंग का जो होता है लोगों का रंग, उससे भी कई गुना ज्यादा आकर्षक आध्यात्मिक जगत के लोगों का काला रंग भी होता है. Their bodies, being spiritual, have no equals in the material world. उनके शरीर सब आध्यात्मिक है, इसलिए उनकी कोई समानता नहीं है भौतिक जगत के साथ. The beauty of a bright cloud, when lightning flashes on it, merely hints at their beauty. जब सफेद बादल में या बादल के अंदर बिजली चमकती है, तो उससे केवल उनकी सुंदरता बढ़ती है. Generally, the inhabitants of Vaikuntha dress in yellow clothing. सामान्यतः वैकुंठ के निवासी पीत वस्त्र धारण करते हैं. Their bodies are delicate and attractively built. उनके शरीर नाजुक भी होते हैं और साथ-साथ एकदम आकर्षक रूप से बने भी होते हैं. And their eyes are like the petals of lotus flowers. और उनकी आंखें जो होती है कमल पत्र के समान होती है. Like Lord Vishnu, the residents of Vaikuntha have 4 hands decorated with the conch shell, wheel, club, and lotus flower. जैसे भगवान विष्णु के वैकुंठ में जो निवासी उनके 4 हाथ होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म इनके हाथ में होते हैं. Their chests are beautifully broad and fully decorated with necklaces of a brilliant diamond-like metal. और उनके वक्षस्थल जो होते हैं वो सुंदर रूप से चौड़े होते हैं और उन पर बहुत ही हीरे मोती उनके हार होते हैं. And costly jewels never to be found in the material world. और ऐसे खर्चीले रत्न जो कभी भौतिक जगत में दिखते भी नहीं हैं. The residents of Vaikuntha are always powerful and effulgent. वैकुंठ के निवासी सदैव शक्तिमान होते हैं और तेजस्वी होते हैं. Some of them have complexions like red coral, cat's eyes, and lotus flowers. इन्हीं का नीलमणि के समान आंखें होती है और एकदम सफेद रंग के कमल पुष्प के पंखुड़ियों जैसे उनके अवयव होते हैं. And each of them has earrings of costly jewels. और खर्चीले रत्नों से बनी हुई उनके कर्णकुंडल भी होते हैं. On their heads they wear flowery crowns resembling garlands.
मस्तक पर भी वे फूल वाले मुकुट पहनते हैं जो हार के समान प्रतीत होते हैं। In the Vaikuntha, there are airplanes, but they make no tumultuous sounds. वैकुंठ में विमान भी होते ही हैं, लेकिन वो विमानों से कोई आवाज नहीं आता है, गरगरी जैसा। Material airplanes are not at all safe. और भौतिक जगत के यहाँ के जो विमान है वो थोड़े भी सुरक्षित नहीं है। They can fall down and crash at any time. हमारे यहाँ के विमान कभी भी गिर सकते हैं, टूट सकते हैं। For matter is imperfect in every respect. क्योंकि जो जड़ पदार्थ है वो हर दृष्टि से अपूर्ण है। In the spiritual sky, however, the airplanes are also spiritual. लेकिन आध्यात्मिक आकाश में विमान भी जो होते हैं वे भी आध्यात्मिक होते हैं। And they are spiritually bright and brilliant. और आध्यात्मिक रूप से तेजस्वी होते हैं और चमकीले होते हैं। These airplanes do not fly business executives, politicians, or planning commissions as passengers. जैसे राजनेता लोग यहाँ पर पैसेंजर विमान में जाते हैं, उसी प्रकार के विमान वहाँ पर नहीं उड़ते हैं। Nor do they carry cargo or postal bags. और उनमें वो डाक का सामान वगैरह जाता है, जैसे यहाँ पर वैसा भी वहाँ पर नहीं जाता है। For these are all unknown there. क्योंकि ये सब वहाँ पर जरूरी नहीं है, अज्ञात सारी चीजें वहाँ पर ये। These planes are for pleasure trips only. ये विमान जो है केवल आनंद की सैर लुटने के लिए होते हैं। And the residents of Vaikuntha fly in them with their heavenly, beautiful, fairy-like consorts. और वैकुंठ के निवासी इन विमानों में उड़ते हैं और उनके साथ सुंदर स्वर्गीय अप्सराएं होती है सुंदर। Therefore, these airplanes, full of residents of Vaikuntha, both male and female, increase the beauty of the spiritual sky. इसीलिए ये विमान जो होते हैं जिनमें वैकुंठ के स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, वे वैकुंठ की शोभा बढ़ाते हैं। We cannot imagine how beautiful they are. हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने सुंदर होते हैं वे। But their beauty may be compared to the clouds in the sky. लेकिन उनकी सुंदरता की तुलना हम आकाश के बादलों के साथ कर सकते हैं। Accompanied by silver branches of electrical lightning. जैसे और बिजली की जो बिजली के सुंदर चांदी के तार जैसा उनमें होते हैं। The spiritual sky of Vaikuntha Loka is always decorated in this way. तो वैकुंठ का आध्यात्मिक आकाश इसी प्रकार से हमेशा सजीला होता है। So, Srila Prabhupada's descriptions of the Vaikuntha spiritual world are very attractive. तो प्रभुपाद ने जो वर्णन किया है वैकुंठ का आध्यात्मिक जगत का, वह बहुत ही आकर्षक है। And we can appreciate these places by hearing about them. और इन स्थानों के बारे में श्रवण करके हम उनकी सराहना कर सकते हैं। When Srila Prabhupada describes the, Vrindavan and the Jamuna and the cows in Vrindavan, we become attracted. प्रभुपाद वृंदावन, यमुना और गाय का वर्णन करते हैं वृंदावन का, तो उससे लोग आकर्षित होते हैं। Even in the material world, when a person wants to go somewhere, first they've heard descriptions about it. इस भौतिक जगत में भी जब कोई व्यक्ति कहीं पर भी जाना चाहता है तो पहले उस जगह का वर्णन सुनता है, ऐसा है वो जगह। Like, business people, they hear that if you go to China, then you can get cheap goods and you can bring them back to India and you can sell them. जैसे व्यापारी लोग सुनते हैं कि अगर चाइना में जाएंगे तो वहाँ पे सस्ते में सामान मिलता है, तो वहाँ से लाके हम यहाँ पर बेच सकते हैं। So many Indian businessmen, they go to China. तो बहुत सारे भारतीय व्यापारी चाइना में जाते हैं। Of course, their idea is to make money. उनका जो उद्देश्य है वो धन कमाना होता है। But before they ever got the idea to go to China, they heard about China from somebody else. लेकिन चाइना में जाने का इरादा करने के पहले उन्होंने सुना चाइना के बारे में किसी से। So besides nice descriptions about these spiritual world, about Krishna Loka and Vaikuntha, Srila Prabhupada's books also describe how you can make an intimate relationship with Krishna. केवल कृष्ण लोक और वैकुंठ का वर्णन ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ आप भी कृष्ण के साथ कैसे घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं उसका भी वर्णन करते हैं। So Srila Prabhupada's books, they give us an idea about, how Krishna is thinking. तो प्रभुपाद की पुस्तक हमें यह कल्पना प्रदान करती है कि कृष्ण कैसे सोचते होंगे।
Krishna can be, Srila Prabhupada says that Krishna, he can be very silent if he likes. प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कृष्ण को चाहिए तो कृष्ण केवल चुपचाप बैठे रहेंगे, बस कुछ बोलेंगे नहीं. Krishna is in everyone's heart. कृष्ण सभी के हृदय में है. Sarvashachaham Ridi Sanivisto. I'm in everyone's heart, he says. मैं सबके हृदय में हूँ, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं. But he can be in your heart very quiet, chup chap. लेकिन वे आपके हृदय में एकदम चुप बैठ सकते हैं, मौन व्रत लिए हुए. So quiet you don't notice he's there. इतना मौन व्रत लिए हुए बैठे होते हैं कभी-कभी कि आपको पता भी नहीं चलता कि वे हैं. But as soon as you start to hear about Krishna and you try to serve Krishna, then Krishna notices that. लेकिन जैसे ही आप कृष्ण के बारे में श्रवण करना शुरू करते हैं और कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो कृष्ण उस बात को देखते हैं. So if Krishna sees that this person is interested in me, then he becomes very active with that person. तो जब कृष्ण देखते हैं कि ये व्यक्ति उसको मेरे में रुचि है, तो उस व्यक्ति के साथ कृष्ण बहुत ही सक्रिय बन जाते हैं. And depending upon the faith, everything begins with faith. The faith of the devotee, he becomes more and more active. सब कुछ श्रद्धा से चलता है, तो उस भक्त की श्रद्धा के अनुसार कृष्ण उसके जीवन में अधिक सक्रिय बनते जाते हैं. Just see the example of Srila Prabhupada. जैसे आप प्रभुपाद का ही उदाहरण देखिए. Srila Prabhupada's Guru Maharaj gave instruction, you try to preach to the people English-speaking language. प्रभुपाद के गुरु महाराज ने उनको उपदेश दिया कि आप अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोगों में प्रचार करने का प्रयास करो. Because of Srila Prabhupada's trying to follow that instruction and his great faith in Krishna, just see what Krishna did to allow that to happen. तो प्रभुपाद ने केवल उस उपदेश का पालन करने का प्रयास किया, तो देखिए कृष्ण ने उनके साथ क्या किया. All alone, he went to America, अमेरिका गए, no money, धन नहीं था, no introduction, कोई जानते नहीं थे किसी को. right? But yet he started this whole Hare Krishna Andolan. फिर भी उन्होंने ये भव्य विशाल हरे कृष्ण आंदोलन बनाया. So how was it possible? तो कैसे संभव हुआ? Because Krishna became very active, क्योंकि कृष्ण सक्रिय बन गए उनके जीवन में. right? And he enlightened people from within the heart to serve Krishna. और उन्होंने ज्ञान का प्रकाश दिया लोगों को हृदय के अंदर से कृष्ण की सेवा करने के लिए. How the boys and girls that Srila Prabhupada was preaching to, how they became inspired to serve Krishna. लड़के और लड़कियां जिनको प्रभुपाद प्रचार करते थे, कैसे वे हुए प्रेरित कृष्ण की सेवा करने के लिए. Srila Prabhupada had great faith in Krishna. प्रभुपाद में कृष्ण के प्रति महान श्रद्धा थी. And he had a desire to help them. और उनकी इच्छा भी थी उनको मदद करने की. So Krishna became active in the hearts of all these persons. तो कृष्ण उन सारे व्यक्तियों के हृदय में भी सक्रिय बन गए. So, like that, Srila Prabhupada explains in the Chaitanya Charitamrita, इस प्रकार प्रभुपाद बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, the Lord wanted to taste the sweet essence of the mellows of love of Godhead. भगवान चखना चाहते थे भगवत प्रेम का दिव्य रस. And he wanted to propagate devotional service in the world on the platform of spontaneous attraction. और वे जगत में भगवत भक्ति का प्रचार करना चाहते थे अप्रतिहता आकर्षण के आधार पर. So, you know, there's devotional service in sadhana bhakti. तो जैसे भक्ति होती है साधना भक्ति में, साधना भक्ति होती है. And there's devotional service on spontaneous attraction, raganuga bhakti. और भक्तिमय सेवा रागानुगा स्तर पर भी होती है. So Lord Chaitanya wanted to spread the spontaneous devotional service. तो चैतन्य महाप्रभु रागानुगा भक्ति का प्रचार करना चाहते थे. Lord Krishna thought, भगवान कृष्ण ने सोचा, all the universe is filled with the conception of my majesty. सारा ब्रह्मांड जो भरा हुआ है मेरी महानता की कल्पना के द्वारा. But love, weakened by that sense of majesty, does not satisfy me. लेकिन उस महानता की कल्पना के कारण जो प्रेम है वो दुर्बल हुआ है, तो इसलिए वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता. If one loves me as the Supreme Lord and himself as a subordinate, अगर कोई मुझसे प्रेम करता है परम भगवान के रूप में और स्वयं को दास समझता है, I do not become subservient to his love. तो
तो मैं उसके प्रेम के वशीभूत नहीं होता, nor can it control me. और वो प्रेम मुझे नियंत्रित भी नहीं कर पाता. In whatever transcendental mellow my devotee worships me, और जिस किसी भी दिव्य रस में मेरा भक्त मेरी पूजा करता है, I reciprocate with him. मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ. That is my natural behavior. यही मेरा नैसर्गिक व्यवहार है. So just like if you meet someone outside, जैसे आप बाहर जाके किसी से मिलेंगे, you don't know them, आप उसको जानते नहीं हो, but you introduce yourself, लेकिन आप अपना परिचय करवाते हो, मैं ऐसा ऐसा हूँ, and they may introduce themselves also. और वो भी अपना परिचय आपको दे सकता है. But that relationship is not very deep. लेकिन वो जो संबंध है वो बहुत गहरा नहीं है. Deep. गहरा, deep नहीं है, गहरा नहीं है. Acha. Neither can you force it to be deep. It's not natural to. और जबरदस्ती से भी आप उसको गहरा नहीं बना सकते. वो नैसर्गिक रूप से आना चाहिए. I can't, if I don't know you, I can't ask you things about your children or your wife. जैसे अगर मैं आपको जानता नहीं हूँ, तो मैं आपको आके पूछ नहीं सकता तुम्हारे बच्चे कैसे, तुम्हारी पत्नी कैसे, ये सब नहीं पूछ सकता मैं. Not natural. वो नैसर्गिक नहीं है. In whatever way my devotees surrender unto me, I reward them accordingly. जिस प्रकार से मेरा भक्त मेरी शरण में आता है, मैं उसी प्रकार उसको उसका पुरस्कार देता हूँ. Everyone follows my path in all respects. सभी लोग मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं सभी तरह से. O son of Prita, हे पृथा के पुत्र, ye yatha mam prapadyante tam stataiva bhajamyaham. गीता में श्लोक है, ये हम प्रपद्यन्ते. If one cherishes pure loving devotion to me, thinking of me as his son, his friend, or his beloved, regarding himself as great, and considering me his equal or inferior, I become subordinate to him. तो कोई मेरी भक्ति करता है, मुझे अपना पुत्र समझकर या और अपने को पिता समझकर या अपने को प्रेमिका समझकर या अपने को सखा समझकर, तो मैं उससे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ अगर वो मुझसे बड़ा बनकर मेरी सेवा करता है. Devotional service rendered to me by the living beings revives their eternal life. जो जीवात्मा मेरी भक्तिमय सेवा करते हैं, उनका आंतरिक जीवन जागृत हो जाता है. Oh, my dear damsels of Braj, हे मेरी ब्रज की प्रिय गोपियों, your affection for me is your good fortune. तुम्हारा जो प्रेम है मेरे लिए, वो तुम्हारा महान भाग्य है. For it is the only means by which you have obtained my favor. क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से तुमने मेरी कृपा प्राप्त की है. Mother sometimes binds me as her son. माता कभी-कभी मुझे पुत्र के रूप में बांध भी देती है. She nourishes and protects me, thinking me utterly helpless. मुझे पुष्ट करती है, मेरा संरक्षण करती है, मुझे समझती है कि मैं बहुत असहाय हूँ. My friends climb on my shoulders in pure friendship, मेरे सखा मेरे कंधे पे भी चढ़ जाते हैं शुद्ध मित्रता में, saying, "What kind of a big man are you? You and I are equal." और बोलते मुझे, तुम कौन से बड़े आदमी हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ. If my beloved consort approaches me in a sulky mood, अगर मेरी प्रिय सखी मेरे पास आती है गुस्सा दिखाकर, that steals my mind from the reverent hymns of the Vedas, तो उससे मेरा मन छीना जाता है, हृदय छीना जाता है, और वेद मंत्र भी मुझे इतने पसंद नहीं आते उसके सामने. So Srila Prabhupada's books are a complete course, that whether it's the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Nectar Devotion, and it gives the readers the inspiration and a complete balance on how to do bhakti. तो प्रभुपाद की पुस्तकें पूर्ण प्रेरणा देती है और पूर्ण संतुलन के साथ हमको आगे बढ़ाती है, चाहे भगवद गीता हो, भागवतम हो, चैतन्य चरितामृत हो या भक्ति रसामृत सिंधु. His unparalleled, unparalleled means there's no comparison to Srila Prabhupada's purports as they unfold or they reveal the mercy of Lord Chaitanya. प्रभुपाद के तात्पर्यों की कोई समानता नहीं है, जो ये तात्पर्य चैतन्य महाप्रभु कृपा को खोल के दिखाते जैसे. There's nothing seen like that in the world anywhere. इस जगत में ऐसा कहीं भी दिखते नहीं है, ऐसे तात्पर्य कहीं भी नहीं है. Srila Prabhupada's books are the storehouse of love of Godhead. प्रभुपाद की पुस्तकें भगवत प्रेम का खजाना है.
But at the same time, Srila Prabhupada's books are down to earth and very practical. लेकिन साथ साथ प्रभुपाद की पुस्तकें एकदम जमीनी स्तर पर भी है और बहुत व्यावहारिक भी है. So the people that are, they just got a book, they don't know anything, they're reading Prabhupada's books, they can appreciate it. तो जैसे एकदम नया व्यक्ति होगा, उसने कभी देखा नहीं प्रभुपाद का पुस्तक, वो पढ़ने लगा, तो वो व्यक्ति भी सराहना कर सकता है प्रभुपाद की पुस्तकों की. But they're also, relished by devotees that have been practicing devotional service for decades. लेकिन इन पुस्तकों की सराहना ऐसे भक्त भी करते हैं जो दशकों से भक्तिमय सेवा का पालन करते आ रहे हैं. Because they understand that Srila Prabhupada, he explains things in such a way that there's different layers of understanding of Srila Prabhupada's books. क्योंकि प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकें इस तरह से लिखी है कि प्रभुपाद के पुस्तकों को समझने के भी अलग-अलग स्तर होते हैं. निचला स्तर भी है, ऊपर का स्तर भी, दोनों है. And so whether a beginner or whether one who's been practicing a long time, they understand more and more how to execute devotional service. चाहे नया भक्त हो या बहुत पुराना भक्त हो, वो समझता है कि कैसे भक्तिमय सेवा करनी चाहिए उसके स्तर पर. Persons on all different spiritual development levels get the nectar from Srila Prabhupada's books. आध्यात्मिक विकास के भी अनेक स्तर होते हैं. उन सारे स्तरों पर जो भी भक्त है, सबको अपनी अपनी पुष्टि मिलती है. So this Prabhupada quotes from Srimad Bhagavatam, 2nd Canto, 9th chapter, text 36, about how deep devotional service is. तो भागवतम 2:36 में प्रभुपाद बताते हैं कि भक्तिमय सेवा कितनी गहरी है. Therefore, there's no need to seek properly qualified candidates for discharging devotional service to the Lord. तो इसलिए Therefore, there's no need to seek properly qualified candidates for discharging devotional service with the Lord. तो In इसलिए other words, you don't have to look for qualified persons to render devotion. यानी योग्य व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कौन व्यक्ति भक्ति कर सकता है, कौन नहीं. सब लोग कर सकते हैं. Let them be either well-behaved or ill-trained. चाहे उनका व्यवहार कैसे भी हो, दुराचारी हो या अच्छे हो. Let them either be learned or fools. चाहे वो मूर्ख हो या एकदम होशियार हो. Let them be either grossly attached or in the renounced order of life. एकदम आसक्त हो या एकदम वैरागी हो. Let them be liberated souls or desirous of liberation. चाहे मुक्त पुरुष हो या मुमुक्ष हो, मुक्ति की इच्छा करने वाले. Let them be inexpert in the discharge of devotional service or expert in the same. चाहे भक्तिमय सेवा के आचरण में वो एकदम निपुण नहीं भी हो या एकदम निपुण हो भी. All of them can be elevated to the supreme position ये सारे लोग परम पद पर उन्नत हो सकते हैं by discharging devotional service under the proper guidance. भक्तिमय सेवा करके सही मार्गदर्शन में. So persons who read Srila Prabhupada's books on a regular basis, we all fit somewhere in these categories, and if you read Srila Prabhupada's books, then you can be confident of progressing in devotional service. तो जो पढ़ते हैं पुस्तकें प्रभुपाद की नियमित रूप से, तो हम सभी कहीं ना कहीं इसमें बैठते हैं, और जो पढ़ते हैं उनकी पुस्तकें वो ऊपर चले जाते ही हैं. Just like if you're trying to make a building, the first thing is to build the plinth. जब बिल्डिंग बनानी है तो पहला क्या करना पड़ता है? वो बनाना पड़ता है. The foundation. उसका नींव जो है, आधार जो है, वो पहले बनाना पड़ता है. If you have a strong foundation, then you can go, 1 mala, 2 malas, 3 malas, manzil, many manzils. अगर आपकी नींव एकदम बलवान है, तो आप कितनी भी ऊंची इमारत बना सकते हैं, लेकिन नींव बलवान होनी चाहिए. But if the foundation is weak, you can't even have the ground floor. लेकिन अगर नींव उसकी मजबूत नहीं है, तो क्या आप ग्राउंड फ्लोर भी बना नहीं सकते. So Srila Prabhupada's books are the foundation. They're that strong foundation for which one can progress in spiritual life. तो प्रभुपाद की पुस्तकें ही वो आधार है, वो नींव है जिसके बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में. So, reading Srila Prabhupada's books, we can be confident, right? And by distributing Srila Prabhupada's books, we can also be confident. तो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़कर हमें विश्वास प्राप्त हो सकता है, और प्रभुपाद की पुस्तकें
वितरित करके भी हमें विश्वास प्राप्त हो What सकता can है। we be confident of? किसके बारे में विश्वास प्राप्त हो सकता है? If we can be confident by reading Srila Prabhupada's books that we are having a strong foundation of spiritual life, if we distribute the books, what can we be confident of? अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो हमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में पूर्ण विश्वास है। तो बांटने से कौन सा विश्वास मिलता है? किसके बारे में विश्वास मिलता है? We're helping others. दूसरों को मदद करने का। We're helping others. दूसरों को मदद कर रहे हैं। So, Vaisheshika Prabhu, what's more, because Srila Prabhupada strongly emphasized that all services to the Sankirtan movement are equal value, Gurukul, farming, scientific research, restaurants, deity worship, and cleaning the temple room floor. तो गुरुकुल हो या खेती हो या रेस्टोरेंट चलाना हो या कोई भी दूसरी सेवा हो, सारी सेवा जो है संकीर्तन आंदोलन की वो सारी समान है। Those who have learned from Prabhupada's books have gone out and applied what they have learned in all kinds of ways. जो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़े और सीखे वो बाहर जाके उसको आचरण में भी लाए। And now people can visit our ISKCON projects तो अभी लोग हमारे इस्कॉन के प्रकल्पों में आ सकते हैं and learn how to apply all the knowledge in Prabhupada's books. और सारा ज्ञान कैसे लागू करने का वो सीख सकते हैं जो ज्ञान प्रभुपाद की पुस्तकों में है। Right? So we have all these things, Gurukul, farm projects, Wagada, so many different things. But the basis of all of those things are in Srila Prabhupada's books. तो हमारे पास ये सब है, गुरुकुल भी है, जो फार्मिंग खेती वगैरह वो सब है, लेकिन उसका सबका आधार क्या है? प्रभुपाद की पुस्तकें। So now we see that as time passes, many devotees are writing their own realizations. तो जैसे समय बीतता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे भक्त अपना खुद का साक्षात्कार भी लिख रहे हैं। And Srila Prabhupada encouraged that. और प्रभुपाद ने इस बात को भी प्रोत्साहन दिया है। He encouraged devotees to write down their realizations. उन्होंने भक्तों को प्रोत्साहन दिया कि आप भी अपना साक्षात्कार लिखिए नीचे कागज पर। Whatever you realized, you write it down. जो भी साक्षात्कार हो आपको आप लिख दो। And now, there's so many different books that devotees have written. तो अभी बहुत सारी पुस्तकें बन गई है जो भक्तों ने लिखी है, बहुत सारी पुस्तकें बन गई है। And some of them are very brilliantly written also. और उनमें से कुछ पुस्तकें तो इतनी एकदम अच्छी है, एकदम सुंदर है। So, there's so many nice books, so sometimes devotees wonder, which books should be distributed. तो इतनी सारी अच्छी पुस्तकें हैं, तो भक्त लोग कभी सोचते हैं, तो भी बांटने की कौन सी? वो सोचते हैं। But it's important to understand Srila Prabhupada's position as the founder Acharya of ISKCON. लेकिन प्रभुपाद की स्थिति समझना बहुत ही आवश्यक है कि प्रभुपाद ISKCON के संस्थापक आचार्य हैं। And though devotees may have written books, the authority for those books are contained in Srila Prabhupada's books. यद्यपि भक्तों ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, लेकिन उन सारे पुस्तकों का जो अधिकार है, वो प्रभुपाद की पुस्तकों में है। So the members of ISKCON, we as the members of ISKCON, can always keep Srila Prabhupada in the center of ISKCON by distributing his books. तो हम जो ISKCON के सदस्य हैं, वे हमेशा प्रभुपाद की पुस्तकों को केंद्र में रख सकते हैं और उनको बांट सकते हैं। As we build more and more temples, and all these temples people will visit, but they should find Srila Prabhupada's books in all of our temples. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर भी बना रहे हैं, तो जितने भी मंदिर बनाएंगे, सब में प्रभुपाद की पुस्तकें दिखनी चाहिए। Just like you find in our temples, you find the murti of Srila Prabhupada on the Vyasa-san. जैसे हर मंदिर में प्रभुपाद की मूर्ति दिखती है, व्यासासन पे होती है ना, वैसे पुस्तकें भी दिखनी चाहिए। So in the same way, that keeping Srila Prabhupada in the center by finding his books in all of our temples.
उसी प्रकार पुस्तकों के माध्यम से भी प्रभुपाद ISKCON के केंद्र में रह सकते हैं, जैसा मूर्ति के माध्यम से रहते हैं। It's not that we don't want to accept the other books, because Prabhupada encouraged devotees to read books. ऐसा नहीं है कि हम दूसरी पुस्तकों को स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला भक्तों को कि आप पुस्तकें लिखिए। Srila Prabhupada encouraged devotees to read books. और प्रभुपाद ने पुस्तकें पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया भक्तों को। But at the same time, we always want to keep Srila Prabhupada in the center. लेकिन साथ-साथ हम हमेशा प्रभुपाद को ही ISKCON के केंद्र में रखना चाहते हैं। And this is an important thing, because Srila Prabhupada is, as our founder Acharya, is the common denominator amongst all of us. ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि संस्थापक आचार्य के रूप में प्रभुपाद जो है हम सबके लिए कोई ना कोई उनका भाग हम हमारे जीवन में सबके जीवन में है। You know, in the early days when there was only one guru, Srila Prabhupada, पहले के दिनों में केवल एक ही गुरु थे। in our movement, Srila Prabhupada was the common denominator amongst all the devotees, because either they were god brothers or god sisters. तो केवल एक ही गुरु थे, प्रभुपाद थे, तो सबके जीवन में केवल प्रभुपाद थे, सबके जीवन में प्रभुपाद का कुछ ना कुछ भाग हिस्सा था। But Srila Prabhupada, now that he's not the only guru in our movement, there are so many different gurus in our movement, he still remains the common denominator amongst all the devotees, because although we may have different spiritual masters, we only have one founder Acharya amongst all of us. तो यद्यपि अभी एक ही गुरु नहीं है, एक से ज्यादा अनेक गुरु है, तो भी प्रभुपाद सबके लिए समान है, क्योंकि प्रभुपाद संस्थापक आचार्य है और इसलिए वे ही सबसे मुख्य है। So as time goes on and there's so many books that are coming, this is to be appreciated. तो जैसे समय आगे बढ़ता है, बहुत सारी पुस्तकें नई आ रही है, लेकिन ये बात को ध्यान रखना चाहिए। And they'll be required. We need to have the histories of all the different Vaishnavas and different philosophical points. Even in Srila Prabhupada's time, His Holiness Bhakti Swarup Damodar Maharaj, who we recently celebrated his disappearance, right? And his Vyas Puja, he wrote a book called The Scientific Basis of Krishna Consciousness, which Srila Prabhupada told the BBT to print, and it's a very important book. तो और दूसरी पुस्तकें भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का इतिहास लिखना होता है और बहुत सारा दर्शन शास्त्र का बिंदु होता है जिसके ऊपर प्रकाश डालना होता है। जैसे हमारे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने पुस्तक लिखी थी प्रभुपाद के समय में, साइंटिफिक बेसिस ऑफ कृष्ण भावना का वैज्ञानिक आधार, आपने देखी होगी। तो प्रभुपाद ने नहीं लिखी है, उन्होंने लिखी थी, प्रभुपाद ने बोला कि इसको भी आप पढ़ो। But all of these books, they lead back to the foundational books of our movement, Srila Prabhupada's books. तो ये सारी पुस्तकें जो है वो एक ही दिशा दिखाती है, जो प्रभुपाद की पुस्तकों की तरफ, जो मूल आधार है हमारे संस्था का। There's a long section here from one Professor O'Neill. एक लंबा विभाग यहाँ पर है। Professor O'Connell. प्रोफेसर ओकानो के बारे में उनके साथ चर्चा है। And he talks about how the Brihat Bhagavatam Amrita, published by the Bhaktivedanta Book Press, written by Gopi Pranadana Prabhu, is a very authoritative and authorized publication of that work. तो वे बताते हैं प्रोफेसर कि ऐसे बृहद भागवतामृत नाम का जो पुस्तक है, जो भक्तिवेदांत बुक प्रेस ने छापा है, वो भी कितना अधिकृत है और कितना अच्छा है। So he was appreciating that, how the followers of Srila Prabhupada are giving more and more books. तो वे इस बात की सराहना कर रहे हैं कि प्रभुपाद के अनुयायी भी कैसा अपना योगदान दे रहे हैं पुस्तकों की तरफ। So by appreciating the work of Gopi Pranadana, that same Professor O'Connell is glorifying Srila Prabhupada, because Gopi Pranadana is, or I should say was, a follower of Srila Prabhupada. तो गोपी पराणाधन प्रभु के द्वारा लिखा हुआ जो पुस्तक बृहद भागवतामृत, उसका गुणगान करके या उसकी सराहना करके वो जो प्रोफेसर ओकानो है वो प्रभुपाद का ही गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि गोपी पराणाधन प्रभु कौन है? प्रभुपाद के शिष्य हैं।
But if the question ever comes in your mind, which of all these books should I distribute? We should focus. Prabhupada was very clear that we should focus on his books. लेकिन कभी आपके मन में प्रश्न आएगा कि इसमें से कौन सा पुस्तक मैं पढूं, तो आप प्रभुपाद की पुस्तक पढ़िए, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि उनके पुस्तक केंद्र में रहे. And Prabhupada, the devotees asked him, should we read the books of the previous acharyas? And Prabhupada replied, तो भक्तों ने पूछा प्रभुपाद से कि क्या हमें पूर्ववर्ती आचार्यों की पुस्तकें पढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया. He said, you can read them. कहा कि आप पढ़ सकते हैं. But first of all, you have to simulate what you have got. लेकिन पहले आपको पूरा ग्रहण करना चाहिए जो तुमको मिला है. पूरा ग्रहण करना चाहिए. Right? What did we get first? We got Srila Prabhupada's books first. पहले क्या मिला? प्रभुपाद की पुस्तक मिला पहले. So we should assimilate them first. तो उनको पूरा ग्रहण करना चाहिए अपने अंदर पहले. Not just that you pile up books in your house. ऐसा नहीं कि पुस्तकों का आप पूरा बना दो, कपाट कर दो पुस्तकों से. What's the use of that? उसका क्या फायदा है? Right? If you have so much food on your plate, थाली में बहुत खाना है. you have to eat that. You can only eat so much, right? आप इतना ही खा सकते हैं. You don't just pile up more and more food on your plate because you can't eat it. आप थाली में ऐसा नहीं बोल सकते और डालो, क्योंकि आप खा नहीं सकते उतना. Right? What's on your plate now, you should finish and digest it, and then you can go on. तो अभी थाली में जितना खाना है उसको पहले खाओ, उसको पचाओ पूरा, बाद में और खा सकते हैं. So first and foremost, we have Srila Prabhupada's books. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्रभुपाद की पुस्तकें. Bhagavad Gita, Nectar Devotion, Teachings of Lord Chaitanya, and then there's Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, 18 volumes, and Chaitanya Charitamrita, 9 volumes. That's a lot right there. First you should digest that. श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत है. पहले इस सबको पचाओ, फिर आगे का सोच सकते हैं. So Vaisheshika Prabhu cites from the Nectar of Devotion, 7th chapter. Srila Prabhupada writes, भक्ति रसामृत सिंधु का 7वां अध्याय प्रभुपाद लिखते हैं. And we should also not be very enthusiastic about constructing new temples. और बहुत ज़्यादा उत्साही हमें नहीं होना चाहिए नया मंदिर बनाने के लिए, ऐसा लिखते हैं. Nor should we be enthusiastic about reading various types of books. नया प्रकार का पुस्तक पढ़ते जाओ, उसके बारे में बहुत ज़्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए. Save and accept the ones which lead to the advancement of devotional service. जो भक्तिमय सेवा में प्रगति के लिए जरूरी है, उनको छोड़कर. Nana Shastra Vichara Naikanupano, Sadharma Samstapako. The 6 Goswamis scrutinizingly studied all the Vedic literatures so that the Sadharma, so that the process of devotional service would be given to us. तो 6 गोस्वामियों ने नाना शास्त्र पढ़े और उनका सार ग्रहण किया और फिर अपनी पुस्तकें लिखी, ताकि हमको वो सबसे महत्वपूर्ण चीज दे सके. So practically, if one carefully reads Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Teachings of Lord Chaitanya, and this Nectar of Devotion, that will give him sufficient knowledge to understand the science of Krishna Consciousness. तो अगर कोई ये 4 पुस्तकें पढ़ेगा, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत और ये भक्ति रसामृत सिंधु, ये 4 पुस्तकें पढ़ेगा तो पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होगा आध्यात्मिक भक्ति जीवन में प्रगति करने के लिए. One need not take the trouble of reading other books. दूसरा पुस्तक पढ़ने की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है. But fortunately, after reading Srila Prabhupada's books and understanding and practicing them for years, devotees have written other books. लेकिन भाग्य से प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने के बाद, उनको समझने के बाद, उनको ग्रहण करने के बाद, आत्मसात करने के बाद, भक्तों ने अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं. So one may make reference from these books in order to, complement the reading of Srila Prabhupada's books. तो इन पुस्तकों में से भी व्यक्ति संदर्भ दे सकता है
प्रभुपाद की शिक्षा को समझाते समय उदाहरण देने के लिए। Okay, so maybe we'll stop there and ask if there's any questions. तो हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और पूछेंगे कि किसी का कोई प्रश्न है। Krishna Prabhu, very wonderful class. Main question in book distribution, how to get more and more enthusiasm every year? Because every year we face new problems in the preaching and in book distribution. Like we go to the same people and they say we have the books. And in the stall also the same question is there. People are busy. How to increase the enthusiasm of the people and what we have to do to increase the vocation. This same question was asked to Srila Prabhupada. यही प्रश्न प्रभुपाद को भी पूछा गया था कि हर साल नई नई समस्या आती है पुस्तक वितरण में, प्रचार में। लोगों के पास पुस्तकें होती है, बोलते हमारे पास है, तो वही उत्साह हर साल कैसे बनाए रखें? ये प्रश्न उत्साह कैसे बनाएं? How to get that enthusiasm? वो उत्साह कैसे प्राप्त करें? So devotees had different ideas about the answer that Srila Prabhupada would give. तो प्रभुपाद को ये प्रश्न पूछा गया और भक्त लोग सोच रहे थे कि प्रभुपाद क्या उत्तर देंगे और सभी भक्त अलग-अलग सोच रहे थे कि प्रभुपाद ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। But you know, he replied that you should worship Krishna. लेकिन उन्होंने क्या उत्तर दिया? आपको कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। You know, and Vaisheshika Prabhu in his book also mentions about strict sadhana. वैशेषिक प्रभु भी इस पुस्तक में लिखते हैं कट्टर साधना के बारे में। So that you know, sadhana includes all the different aspects of devotional service. तो साधना में सब कुछ आता है, भक्ति में सेवा के अलग-अलग पहलू सब आते हैं। Like chanting 16 rounds. 16 माला जप करना। I mean, there's different ways you can chant 16 rounds. 16 माला जप करने के भी कई सारे तरीके हैं। You know, you can chant while you're reading the newspaper. समाचार पत्र पढ़ते-पढ़ते भी जप कर सकते हैं आप। You can chant while you're on your smartphone. मोबाइल फोन देखते-देखते भी जप कर सकते हैं। Right? That's one chanting. वो एक प्रकार का जप है। Or you can really focus on the holy name and try to hear the holy name. या नाम पर ध्यान एकाग्र करके भी जप कर सकते हैं, नाम सुनने का प्रयत्न करते हुए। So there's sadhana, and then there's strict sadhana. तो एक साधना होती है और एक कट्टर साधना होती है। There's the worship of the deity in the temple. मंदिर में भगवान की पूजा वो होती है। You know, to cook for Krishna. कृष्ण के लिए रसोई बनाना। To dress Krishna. कृष्ण की वेशभूषा करना। To become qualified to cook for Krishna and dress for Krishna. कृष्ण के लिए वेशभूषा करने के लिए, कृष्ण के लिए रसोई बनाने के लिए सुयोग्य बनने का प्रयास करना। There were two devotees, and Srila Prabhupada had a god brother, and he lived in Vrindavan. दो भक्त थे और प्रभुपाद के गुरु भाई थे जो वृंदावन में रहते थे। One disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his name was Anand Prabhu. एक शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, जिनका नाम था आनंद प्रभु। So he used to cook. तो वे रसोई बनाते थे। He used to come to the temple and cook for the devotees. मंदिर में आते थे, भक्तों के लिए रसोई बना के चले जाते थे। So Srila Prabhupada said he was a very good cook. प्रभुपाद ने कहा कि ये व्यक्ति भक्त कुकिंग कर सकता है। So one devotee named Apurva, another devotee named Gopati, they studied under Anand how to cook. तो एक अपूर्व नाम के, दूसरे गोपति नाम के भक्त थे, तो उन्होंने आनंद के नीचे प्रशिक्षण लिया कैसे कुकिंग करने का, कैसे रसोई बनाने का। You know, everybody knows how to cook something, right? सबको कुछ ना कुछ व्यंजन बनाना आता ही है।
But then there's how does Krishna like it? लेकिन कृष्ण को पसंद आता है वैसा कैसे बनाने का, वो एक बात है. So that, you do your devotional service, you cook a khichdi, you offer it to Krishna, that's devotional service. But then you can also cook a nice paneer sabji in the way that Krishna likes it. तो आप भक्ति करो, कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाओ, ऑफर करो, अर्पण करो और बांटो और खाओ. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका है कि आप अच्छी पनीर की सब्जी भी बना सकते हो कृष्ण के लिए, कृष्ण को जैसा पसंद है. Srila Bhaktivinoda Thakur in his songs, the Bhogartik song, he describes so many preparations. How many devotees know how to cook all those preparations? तो भोग आरती सुनते हैं आप 12 बजे, भक्तिविनोद ठाकुर का जो गीत है, कितने सारे व्यंजनों का वर्णन है, उनमें से कितने व्यंजन आप बना सकते हैं? Sar, puri, mocha ganda. Who knows how to make mocha ganda? वो जो नाम भी बोलना नहीं आता है, ऐसा व्यंजन किसको बनाना आता है? गुजरात का है, बंगाल का है. Mocha ganda, Chaitanya Mahaprabhu's favorite sabji. चैतन्य महाप्रभु की प्रिय सब्जी है, मोचा गंदा है. Only cashew gravy and kacha paneer. कच्चा पनीर और काजू का वो. What is that? वो क्या है? It's nowhere. वो कहीं भी नहीं मिलता है. Every day they're feeding that cashew gravy, kacha paneer. तो काजू का ग्रेवी और कच्चा पानी. First of all, you should never have kacha paneer. पहले तो कच्चा पानी होना ही नहीं चाहिए. तेरा पेट खराब हो जाता है. हमारा पेट ही खराब हो जाएगा. Paneer has to be fried. पनीर को पकाना ही पड़ेगा. You have to put it fried and then put it in the sabji. तलो और उसको सब्जी में डालो. Everywhere you see cashew gravy, kacha paneer. सब जगह पे काजू का ग्रेवी और कच्चा पानी, सब जगह पे देखेंगे आप. Where it's coming from? कहाँ से ये आ रहा है? Prabhupada never ate cashew gravy. प्रभुपाद ने कभी नहीं खाया cashew gravy. He never said make cashew gravy for Krishna. कृष्ण के लिए cashew gravy बनाओ ऐसा कभी नहीं बोला. Never ever. तो एक बार भी नहीं बोला. Kacha paneer. कच्चा पानी. It's going on. Parampara. चल रहा है परंपरा. Now, जब तक cashew gravy, kacha paneer नहीं होते हैं, ये प्रसाद नहीं है. कच्चा पनीर और कैशू ग्रेवी नहीं होगा तब तक प्रसाद ही नहीं बनता है, ऐसा लगता है लोगों को. लेकिन कहाँ से आया? आया कहाँ से बोलो? So you can do devotional service, okay, but you can learn how to do devotional service as Krishna likes it. तो आप भक्ति कर सकते हैं, भक्तिमय सेवा, लेकिन कृष्ण को जैसी भक्ति पसंद है वैसी भक्ति कैसी करनी है, वो एक दूसरी बात है. You read Yamuna's cookbook. यमुना माता जी ने कुक लिखा है, रसोई बनाने का बुक लिखा है. Lord Krishna's cuisine. लॉर्ड कृष्णा's cuisine ऐसा उस बुक का नाम है. She was trained personally by Srila Prabhupada. यमुना माता जी को स्वयं प्रभुपाद ने सिखाया. Right? And then you can understand what Krishna likes. फिर आपको समझ में आ सकता है कि कृष्ण को पसंद क्या है. Maybe we like cashew gravy, kacha paneer, but Krishna don't like. शायद हमको काजू का ग्रेवी और कच्चा पनीर पसंद है, लेकिन शायद कृष्ण को पसंद नहीं है. So this is a way to become enthusiastic, is become enthusiastic about your service to Krishna, your sadhana. तो उत्साही बनने का तरीका यही है कि उत्साही बनो तुम्हारी भक्तिमय सेवा के बारे में, तुम्हारी साधना के बारे में. Offering prasad and taking prasad, this is sadhana bhakti. प्रसाद अर्पण करना और प्रसाद लेना, यह साधना भक्ति है. But we can refine that. We can try to find out what Krishna likes. लेकिन हम इसको और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं कि हम ये ढूंढ सकते हैं कि कृष्ण को क्या पसंद है. Right? And then offer that to Krishna. फिर वो बना के कृष्ण को दो. And then we can become enthusiastic in our devotional service. फिर हम अपनी भक्ति में एकदम उत्साही बनेंगे. Chanting better and listening better, hearing better, and doing practical service in a better way. These are the ways to become enthusiastic in our preaching. ज़्यादा अच्छा जप करना, ज़्यादा अच्छा श्रवण करना, ज़्यादा अच्छा व्यावहारिक सेवा करना, ये सारे तरीके हैं हमारे प्रचार में उत्साही बनने के. Any other questions? और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा. श्रीमद् भागवत गीता प्रचार के टाइम
तो और दूसरे प्रभु जी लोग बोलते हैं कि हमको गीता प्रेस गोरखपुर का चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, तो उनको कैसा कन्विंस किया जाएगा? People ask for Gita Press. I want Gita Press book. So I don't want this. So how to answer them? Well, we shouldn't be disturbed by that. इससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए. Because there are very few people that are looking for the diamond. क्योंकि हीरा जिनको चाहिए ऐसे बहुत थोड़े लोग होते हैं. For the glass bangle, there's many takers. कांच का कंकड़ के लिए बहुत सारे ग्राहक मिल जाएंगे आपको. Manusyanam sahasreshu kaschid yatiti siddhaye yatatam api siddhanam kaschid mam viditatvada. Krishna says that out of 1,000 people, one is going to be interested in Krishna consciousness. कृष्ण ने ही स्वयं भगवत गीता में कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु 1000 लोगों में से एक व्यक्ति को कृष्ण भावना में रुचि होगी. So it's not, we shouldn't become discouraged because people don't want this. हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि लोगों को ये नहीं चाहिए. That's natural. ये तो नैसर्गिक है. They want sense gratification. उनको क्या चाहिए? उनको इंद्रिय तृप्ति चाहिए. Right? They want to become successful at fruitive activities. उनको सकाम कर्म में सफल बनना है. So they have some idea, right? But if you preach to them and the merits of the book, then if he's intelligent or she's intelligent, they can appreciate it. उनके मन में कुछ ना कुछ कल्पना होती है ऐसा करने का, लेकिन आप अगर पुस्तक कैसे भी करके देंगे तो अगर वो पढ़ेगा. First of all, Gita, the merits. Yeah, the merits. पुस्तक का गुण बताओ. Just like Gita Press has not even one single book like this. गीता प्रेस का ऐसा इस प्रकार का एक पुस्तक है क्या? See the paper? इसका कागज देखो आप. First class paper. एकदम प्रथम श्रेणी का कागज. First class binding. इसका बाइंडिंग देखो. And colored photographs. और उसके अंदर के फोटो देखो कितने सुंदर सुंदर है. Explaining Bhagavad Gita properly. अच्छी तरह से भगवत गीता समझाई गई है. And Gita Press never made one single devotee in America. और गीता प्रेस ने अमेरिका में एक भी भक्त बनाया क्या? Not even one. एक भी नहीं बनाया अमेरिका में भक्त. And this Bhagavad Gita made hazaro bhakti for it. So there's so much Shakti in this Bhagavad Gita. इस भगवत गीता में बहुत शक्ति है. And you can tell them that by reading this Bhagavad Gita, now I'm chanting 16 rounds. आप उनको बता सकते हैं कि मैंने ये भगवत गीता पढ़ी और अभी मैं 16 माला जप कर रहा हूँ. And I chai chhod diya. और मैंने चाय भी छोड़ दी. अरे chai chhod diya? चाय कैसे छोड़ दिया? How many people by reading Gita Press could leave the tea? गीता प्रेस का बुक पढ़ के कितने लोगों ने चाय छोड़ा? Rather reading Gita Press, they're drinking more tea. So you can explain to them, but it's not हमारे हाथ में नहीं है. लेने वाला है भगवान श्री कृष्ण हाथ में है. हम लोग देने वाला है. देने का काम हमें करना है. देना कि नहीं देना है, नहीं देना है वो कृष्ण के हाथ में. That's our business is give. They take or don't take, that's not our business. हमारा काम देना है, उनको लेना कि नहीं लेना हमारा काम नहीं है. If you become upset that they're not taking, that's our immaturity in devotional service. अगर आप दुखी हो जाएंगे उनके नहीं लेने से, तो ये हमारी अपरिपक्वता है. And they may have so many objections not to take. मेरे पास है, पहले है, वो है, so many things. और नहीं लेने के लिए बहुत सारे बहाने उनके पास है. आक्षेप उनके पास बहुत है, नहीं लेने के कारण पता नहीं, बहुत है. But we depend on Krishna. We pray to Krishna to enlighten them within the heart to take these books. लेकिन हम कृष्ण पर निर्भर है
कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि आप इनको अंदर से ज्ञान का प्रकाश दीजिए ताकि ये पुस्तक लें। Okay? Any other questions? और कोई प्रश्न? Way in the back. बुक देने जाते हैं तो प्रभु जी लोग ज्यादा बोलते हैं हम पिए हैं, हम छुएंगे नहीं, तो उसको कैसा समझाया? पिए हैं? हाँ, दारू पिए हैं, हम नहीं छुएंगे। प्रश्न ये है इनका कि हम पुस्तकें बांटने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम पिए हुए हैं, हम पुस्तक को हाथ नहीं लगाएंगे, तो उसको कैसे प्रचार करने का? Yeah, go to somebody else. दूसरा किसी के पास जाओ। Next person. अगले व्यक्ति के पास। बहुत सारे लोग हैं ना, एक वो एक ही नहीं है। पीने वाले के साथ बात मत करो। सिर्फ टाइम पास करेगा। टाइम पास। टाइम पास। टाइम पास। टाइम पास करेगा और कुछ नहीं करेगा। Next person. अगला व्यक्ति आएगा ना, वो जाएगा, दूसरा आएगा। In India, there's no shortage of people. लोगों की कमी है क्या भारत में? बहुत लोग हैं। Prabhupada used to say, don't waste your time with drunkards and Christians. जो शराबी हैं और जो क्रिश्चियन हैं, उनके साथ समय बर्बाद मत करो, ऐसा प्रभुपाद ने बोला। They'll only argue this, वो क्या that. करेंगे? केवल बहस करेंगे बस। So just go to the next person. उसको छोड़ के दूसरे को सामने लाओ। But be respectful. लेकिन आदर युक्त रहो, आदर दो। Thank you, sir. Thank you for stopping. Nice to meet you. Hare Krishna. धन्यवाद, आप कम से कम आए, देखा पुस्तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोल के उसको प्रोत्साहन दे। Thank you for giving such a beautiful class. And thanks for motivating me once again for reading Prabhupada's book regularly. I have a small question. I've seen Prabhupada's every small single book which he has written, and that every phrase and every line which is written by him, that every sentence and every words are having some beautiful meaning. So whenever I'm speaking and talking among the people, among the students or among anyone, in that situation I wanted to increase that same enthusiasm in my heart to explain them how the beautifully he explained and narrated this thing. So the one thing which I am lacking more, I'm lacking more things in a more regularly, but the main cause of mine, like Prabhupada has given him a whole life for making us awaken. So I'm not able to read his book every day regularly, how to make that determination and compassion for reading his book regularly. And apart from that, the small book which was written by him, how to regulate that books also while speaking with the people, while quoting in that book. Well, it's a matter of developing good habits. Just like, how do people develop bad habits? Smoking. Smoking is a bad habit, right? तो मैं पुस्तकें पढ़ नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए क्या करूँ? तो प्रभु जी कहते हैं कि अच्छी आदतें कैसे लगाएं, इसका प्रश्न है। जैसे लोगों को बुरी आदतें होती है, धूम्रपान करते हैं, तो उसको कैसे छोड़ने का ये प्रश्न होता है। So, people every day they smoke and then they have the habit. They can't leave it, right? So in the same way, that's how we develop good habits. We do something on a regular basis and then we can't leave it. We have to continue to do that thing. जैसे बुरी आदत लगती है और छूटती नहीं है, धूम्रपान करना। उसी प्रकार अच्छी आदत में एक बार लगेगी आपको, तो छूटेगी नहीं आपको। तो अच्छी आदत लगाओ। So, developing good habits. And one of the good habits is to read Srila Prabhupada's books every day. तो अच्छी आदतों में से एक अच्छी आदत ये है कि हर दिन प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना। Just like every day you eat, right? जैसे खाते हर दिन है, खाते कि नहीं? Nobody forgets to eat. खाने को भूल जाते कभी-कभी, आज नहीं भूल गया। Why you eat every day? हर दिन क्यों खाते हैं? Huh?
Because if you don't eat every day, your body won't have strength. क्योंकि खाएंगे नहीं तो शरीर में शक्ति नहीं आएगी शरीर में. So, in the same way, if you read Srila Prabhupada's books, you'll get spiritual strength, adhyatmic shakti, strength from reading. खाने से भौतिक शक्ति मिलती है, उसी तरह पुस्तकें पढ़ने से प्रभुपाद की आध्यात्मिक शक्ति मिलती है. Because it's Prabhupada's instructions, everyone should read my books. Therefore, by pleasing Srila Prabhupada, you're pleasing Krishna. क्योंकि प्रभुपाद का ये आदेश है, उपदेश है कि सब लोग को मेरी पुस्तकें पढ़नी चाहिए. तो जब आप पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनके आदेश का पालन कर रहे हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं. It's a matter of practice. ये अभ्यास का आदत का प्रश्न है. Developing good habits. अच्छी आदतें विकसित करना. By doing it on a daily basis. हर दिन करके ये अच्छी आदत लग सकती है. Right? Time for prasadam? प्रसाद का समय हो गया. Okay. Hare Krishna.